Hi guys, my name is Uma Sarva. Welcome back to my channel. In today's lesson, I'm gonna teach you something we use a lot in our conversation. That's the word so and neither. How can we use these words in our conversation? A lot of time when we talk to the people, we want to contribute something in the conversation and we want to show them that we are agree with them. So how can we express our feelings and how can we express that we agree with them? So in that case, we use these words so and neither. Agree with someone. If the sentence is positive, there is no negative thing in it, then we use the word so. And in case of negative sentences, just like don't or not, we use the word neither. Just like I have the example, I like ice cream. It's a positive sentence कि मैं आइसक्रीम पसंद करता हूँ. My friend said that I like ice cream. So if you agree with it, okay, you also like ice cream. So how do you say it? So do I. मैं भी आइसक्रीम पसंद करता हूँ. So instead of saying that I also like ice cream या I like ice cream too, you should say so do I. I can swim. मैं swim कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. So do I. Here is the negative word. I don't like ice cream. So in case of negative sentence, we use the word neither. Will not use the word so in case of negative. So in case of negative, we use neither. I don't like ice cream. Neither do I. I don't like swimming. Neither do I. Okay, here I want to say something. Keep it in your mind that so do. This is helping verb and this is pronoun. आपने एक चीज अपने माइंड में रखनी है कि जो हेल्पिंग वर्ब है इट ऑलवेज मैचेस विद द प्रोनाउंस. इफ प्रोनाउन इज आई देन वी यूज द वर्ड डू. ओके, इफ प्रोनाउन इज ही और शी और सिंगुलर देन वी यूज हेल्पिंग वर्ब डज बिकॉज वी नो दैट ही शी और सिंगुलर के साथ हमारा डज आता है. सो आई, वी, यू एंड दे के साथ हम लोग डू यूज करेंगे. सो डू आई, सो डू यू, सो डू वी, सो डू दे. ओके, अगर ही और शी है और हमारे पास कोई सिंगुलर है, जस्ट लाइक इफ आई वांट टू मेंशन माय फ्रेंड, जस्ट लाइक आई हैव अ फ्रेंड जॉन एंड आई वांट टू मेंशन माय फ्रेंड, ओके, आई लाइक आइसक्रीम एंड हियर आई वांट टू से सो मेरे फ्रेंड को भी पसंद है, जॉन को भी पसंद है, तो मैं कैसे कहूंगी? सो डज जॉन. सो डज जॉन के जॉन को भी आइसक्रीम पसंद है. सेम इसी तरह नाइदर के साथ होगा कि आपका जो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब इट ऑलवेज मैचेस विद द प्रोनाउंस. इसको हमेशा प्रोनाउन के साथ मैच होना है. ऐसे नहीं करना कि प्रोनाउन कुछ और है और हमारा हेल्पिंग वर्ब उसके साथ मैच नहीं हो रहा. There is a time when we don't use the word do and does in our conversation. Do and does. At that time, we can use different helping and auxiliary verb. Just like here are some examples. कि do and does, these are also helping verbs. They help the actual verb. तो अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल ऐसी हैं. I can swim. I can is helping or auxiliary verb. So auxiliary और helping verb क्या करते हैं? They help the actual verb. Swim is the actual verb. तो हमारा actual verb क्या है? Swim. SWIM हमारा actual verb है swim. So can is the auxiliary verb. एक चीज याद रखिएगा कि जो verb हम लोग यूज कर रहे हैं तो उसी वर्ब में हम लोगों ने रिप्लाई करना है. उसी ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब में हम लोगों ने रिप्लाई करना है. जहां जहां हम लोगों ने डू एंड डज का यूज किया था उसके रिप्लाई में भी हम लोगों ने डू एंड डज का यूज किया था. लेकिन जहां पे हमारे पास डिफरेंट ऑक्सिलरी वर्ब होंगे, सो वी हैव टू कीप समथिंग इन आवर माइंड कि अगर ये वाला ऑक्सिलरी वर्ब यूज कर रहे हैं तो हमें भी रिप्लाई में वही वाला वर्ब यूज करना है. आई कैन स्विम. सो यहाँ पे हमारा
कैन यूज हो रहा है तो हमारा जो ये होगा कि अगर हम लोग एग्री कर रहे हैं अपने फ्रेंड के साथ या किसी के साथ, तो हम लोगों ने उसमें कैन का ही यूज करना है। यहाँ पे हम लोगों ने डू डज का यूज नहीं करना, क्योंकि ही और शी डजंट यूज डू एंड डज इन इट। सो आई कैन स्विम, सो कैन आई। इसी तरीके से अगर इसका नेगेटिव होगा आई कांट स्विम, ओके, आई कांट स्विम, इसमें हमारा क्या होगा, नाइदर कांट आई, ओके। हमारा कांट यूज हुआ है, ना कि डू एंड डज यूज हुआ है। इसी तरीके से एक और हमारे पास एग्जाम्पल है, आई हैव ट्रेवल टू इटली, आई हैव ट्रेवल टू इटली। इसमें पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट हमारे पास यूज हुआ है। हैव यूज हुआ तो हमारे उसके एग्री, अगर हम लोग एग्री कर रहे हैं या कोई भी उसके साथ एग्री कर रहा है, उसमें उसने हैव को ही यूज करना है। अगर यहाँ पे यूज होता हैड, then the other person responded in had or has, okay. I have traveled to Italy, so have I. Same thing कि ये इसके साथ मैच कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे करते I had traveled to Italy, then so had I. इसमें ऐसे नहीं होना था so do I, so did I, no. We have to keep this thing in our mind that what type of auxiliary verb we are using. नेक्स्ट वन इज शी इज नॉट सैड, शी इज नॉट सैड, इसमें आई एस यूज हुआ है, शी इट्स अ नेगेटिव, ओके, इसमें आई एस यूज हुआ है। तो इफ आई एम टेलिंग हर अबाउट माई फ्रेंड, सो नाइदर इज जॉन, नाइदर डू जॉनी, नाइदर इज जॉन। दे आर एंजॉय द पार्टी, दे आर एंजॉय द पार्टी, वो पार्टी को एंजॉय नहीं कर रहे। यहाँ पे हमारे पास इज आर एम यूज हो रहा है, तो जहाँ पे हमारे पास इस तरह के हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे वहां पे हमने सेम उसी तरह करना है। जॉन के साथ हमारा इज यूज हुआ है, अगर हम यहाँ पे आई लगाते तो हमारा क्या होना था, नाइदर एम आई, ओके। अगर हमने वी करना था, नाइदर आर वी, यहाँ पे अब हमारे इसी तरीके से दे आर नॉट एंजॉयिंग द पार्टी, नाइदर आर वी, because we use are with we don't use is and am with we use w e we are, they are, he is, she is, I am. so इसके हिसाब से हम लोगों ने सारा कुछ करना है, neither or we, okay. next one is I ate pizza yesterday, मैंने कल पिज्जा खाया था, it's past tense, so इसका हमारा रिप्लाई क्या होगा, हमने अगर इसके साथ एग्री कर रहे हैं, आई एट पिज्जा यस्टरडे, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट आई एट पिज्जा यस्टरडे, एंड इफ आई आल्सो एट पिज्जा यस्टरडे, सो मैं क्या कहूँगी, सो डिड आई, सो मैंने भी खाया है। कि अब देखें यहाँ पे पास्ट हमारा पास्ट यूज हुआ, इसमें हमने डिड का यूज किया, क्योंकि पास्ट में हम लोग डिड को यूज करते हैं, प्रेजेंट में हम लोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग डू डज को यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग हैज हैव को यूज करते हैं। तो आपने प्रोनाउन के साथ मैच करना है कि जो भी हमारा हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब यूज हो रहा है। सो आई थिंक टुडे वी हैव डन अ लॉट, वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। आई होप यू एंजॉय दिस लेसन एंड यू हैव लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट सो एंड नाइदर, कि हम लोग कहाँ पे सो एंड नाइदर का यूज कर सकते हैं, और जहाँ पे हम लोग सो और नाइदर का यूज कर रहे हैं, सो वी हैव टू कीप वन थिंग इन अवर माइंड कि वी हैव टू मैच द हेल्पिंग वर्ब विद अ प्रोनाउन, okay, with a pronoun, and if the other person is using one type of auxiliary verb, so we should use the same type of helping or auxiliary verb in response. We cannot use different type of auxiliary verb in our response, just like can, have, is, do, does। तो इन सब को हम लोगों ने आपस में मिलाना है, उनके बगैर हम लोग नहीं कर सकते। So I think the today's lesson is very helpful for you. If you want to learn more things, then please like and subscribe my channel. Thank you so much.